and Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 12th SPCC Part 1. In that chapter number 1, Banking Correspondence. Already we have seen many part of this chapter. So today we are here to see the part 4 of the chapter. So let us move on with the today's video. Before starting the current topic, let us discuss about the portion that we have seen on the previous lecture, which means a short summarization of the revision. So last time we have seen about the KYC form that was being filled up by a customer so that the bank can know about the customer in a very well manner. In that KYC form, they have to submit necessary documents with photo identifications and the documents with the residential proof, which means the address proof. After that, we have seen that an introduction person was a referensive person was needed to open up the bank account, who can introduce us to the account holder, which means the BOB bank. But the person must be at least having 6 months of record with that bank. But nowadays practically it is not needed so much. But if you are seeing the legal way, then an introducer is needed for opening an bank account. After that, we have seen that a nominee form was being seen, in which we can file up a nominee. If we are not there, if anything happens to us, then whom to the money will be given up. So that decision has been made at the time of the opening the account only. So we can give the nominee detail at that time when we need to think that who we are going to give. So in that manner we can give a nominee name, but if the nominee is minor, then again we have to appoint a guardian for that person. After that, we have to give our current specimen, signature, recent photo and our customer ID number and name. And then after that we have to fill the form number 60 and 61. 60 for the person who is tax excessive and not paying the tax, or paying the tax but not having the PAN card, they have to fill that. And if you are in 61, we have to fill for the farmers. If you are a farmer, if you are earning, who are tax free, they have to fill the form number 61. After that, all the necessary documents are verified by the bank staff and they are filling up the bank use form. And finally, we are able to open up the bank account. So here we are completing the point 1, which means the topic letter to open the bank account. So today we are going to see from the further portion. So now let us move on with the line-to-line explanation of the topic from the further video in the PDF manner. So students, now let us move on with the today's topic. So we have completed the letter 1 on the previous portion. So today we are going to see the letter 2. What is the letter 2? Letter to open a demat account. So if you want to open a dematerialization account for dealing with the SBI securities, for that purpose you have to write a request letter to the bank. So such thing is still needed, that's why it has been given up here. So let us see in which manner the letter can be written up. So for the first portion, you have to write your phone number and mobile number on the right side. So you have to write on the right side the phone number. What is the phone number? 026743223 4 X's are given because majorly in the specimens we are not giving the correct number, so it is just an random number. After that, a mobile number is given 7878. So if you are having a landline number, you can write it on the phone number and your mobile number can be written on the mobile number portion. So after that, your address that is being mentioned up in the left side. You know that according to the new amendment of letter writing, the address must be written on the left side. Okay, so here the address is written. Name of the person, Manoj B. Dave. But you can write your name, whatever your name. Sulakshana, I am Sengundhar, I am telling. Your address 7 Prabhat Row House, Full Bazaar, Lunawada, 389230, which means you have to write your full address with the pin code. After writing that, the date, compulsorily date you have to mention.
What is the date? So year 16 December 2017 is been given up. So if you have been asked with a particular date in letter writing, how it was been asked, in the same manner you have to mention that particular date. If that particular date is not done, then you can write the current date, which means the today's date you can write up. So in this manner, on which date you are writing the letter, on that also you can mention it. So after that, the address, the manager, Vijaya Bank, Full Bazaar, Lunawada 389230. So now to whom you are writing? To manager. So you have to write the manager, which bank, then it is Vijaya Bank. So whichever bank it is, you have to mention that bank's name, where it is in Full Bazaar only, and Lunawada, that address, again pin code the same, as both the bank and the house is near only, that's why the same address has been seen up. So now subject, as I said, when you are writing an official letter, formal letter, mostly subject is included in that. So subject, again after leaving a line, if you are seeing one line is left, phone number is written, on the opposite side the name and the address is written. After the address, if you are seeing there is one line left, then date is written. When the date is written, after that again one line is left, then the manager address is given, again one line is left, and after that subject is written. So according to the line, single line notebook, one line, the gap you are seeing, there you have to leave one line. So what is the subject? To open a demat account. So what is the subject? Why we are seeing this letter? To open a demat account. Again leave one line. On the right side, write dear sir, because the courtesy of starting a letter is needed. So we have to start up with dear sir. So now one paragraph we will see in a very detailed manner. I am going to read it out. Listen it out carefully. I have held a saving account number 00911356690 with your bank for the last 6 years. Bank has introduced various new schemes and custom-oriented services, as a result of which reputation of the bank in Lunawada area has increased. So now the person, who is that person? Manoj B. Dave. He is telling that he is having a saving account. He is telling that कि उसका एक saving account है जिसका number है 00911356690 with your bank, with Vijaya Bank, from last 6 years. From how many years he is holding the account? From last 6 years. Bank has introduced various new scheme and custom oriented services as a result. अगर बैंक की हम बात करते हैं तो बैंक ने बहुत नए स्कीम्स लॉन्च किए हैं और कस्टम ओरिएंटेड सर्विसेज भी बैंक की बहुत अच्छा है, जिस वजह से लूनावाड़ा के अंदर विजया बैंक का रेपुटेशन, यानी लोग उसके बारे में अच्छा व्यू रखते हैं, ऐसा वो कस्टमर हैप्पीनेस के साथ बैंक को बताता है. सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पैराग्राफ. Recently, the online banking and the demat account opening campaign launched by your bank has received a good response. I also desire to open a demat account for trading in share market. I want to connect my demat account with my saving account number 00911356690 with your bank. तो अब वो बोल रहा है कि रिसेंटली विजया बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग और डीमैट अकाउंट का कैंपेन मतलब टाइप ऑफ फंक्शन जिसमें ये नए स्कीम लॉन्च हुए वैसे बताया गया. तो उस टाइम पे इन्होंने भी देखा और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस इन्होंने लोगों के बीच में देखा, इसलिए ये खुद मनोज भी दवे भी चाहते हैं कि उनका एक डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग करने के लिए ओपन अप किया जाए. तो वो क्या चाहते हैं कि उनका ऑलरेडी जो सेविंग अकाउंट है उसके साथ डीमैट अकाउंट को कनेक्ट करके बैंक उनको एक डीमैट अकाउंट ओपन करके दे. I assure to obey the rules and regulations required to open a demat account. I shall maintain the minimum quarterly balance of 5 months as per the condition of the demat account. अब मनोज भी दवे बोल रहे हैं कि बैंक का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, जैसे नेसेसरी हमने अकाउंट ओपनिंग डिटेल में देखा, नेसेसरी डिटेल्स, हमें सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें एश्योरिटी देनी पड़ती है, मिनिमम बैलेंस, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है. इन द सेम मैनर द मनोज बी इज नोइंग अबाउट द बैंकिंग फैसिलिटी because he is using from last 6 years. So he is telling that he is assuring that whatever the rules and regulation he has to obey, he will obey that portion. Rather than that, मिनिमम क्वार्टरली यानी 3 महीने तक उनको क्वार्टरली उनमें 5000 का बैलेंस तो होना ही चाहिए, यानी 5000 होना ही चाहिए उनके अकाउंट में. सो ही इज टेलिंग दैट मिनिमम क्वार्टरली बैलेंस 5000 भी वो मेंटेन रखेंगे, जो डीमैट अकाउंट का एक
करंट कंडीशन है वो उसको ओबे करने के लिए रेडी है। Herewith I enclose and delete field in demat form 2 photographs, photocopies of license, PAN card and a check for ₹500 to activate the demat account. As soon as the demat account is opened, I request you to send its passwords and customer ID so that I can operate the demat account. So अब वो क्या करते हैं, डीमेट अकाउंट का भी जो फॉर्म आता है, हमें बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। तो इवन डीमेट अकाउंट का फॉर्म है तो डीमेट अकाउंट के फॉर्म के साथ ये रिटर्न एप्लीकेशन कंपलसरी देना पड़ता है। तो उन्होंने डीमेट अकाउंट का फॉर्म भर दिया, 2 फोटोग्राफ्स जो डीमेट अकाउंट के लिए चाहिए वो रख दिया, फोटोकॉपीज ऑफ लाइसेंस, फोटोकॉपी जेरोक्स कॉपी ऑफ लाइसेंस, पान कार्ड रखा और ये राइटिंग जो अभी लेटर हम पढ़ रहे हैं ये लेटर दे दिया। फिर चेक 500 का दिया है, क्यों, डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए 500 का चार्ज लगता है, वो 500 का उन्होंने चार्ज दे दिया और मिनिमम 5000 का बैलेंस मेंटेन करने का भी उन्होंने एश्योरिटी दे दिया। और फिर वो बैंक को ये बोलते हैं कि अगर डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो पासवर्ड है और कस्टमर आईडी, डीमेट अकाउंट का अलग कस्टमर आईडी क्रिएट किया जाता है, यू नो दैट, एंड पासवर्ड इज गिवन, सो दैट पासवर्ड एंड जो कस्टमर आईडी है वो उन तक पहुंचाया जाए ताकि वो डीमेट अकाउंट को यूज कर पाए। आई एक्सेप्ट अ प्रॉम्प्ट प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड। अब मनोज भी दवे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक जल्द यानी एक फास्ट प्रोसीजर उनके लिए किया जाए और उनको वो चीज़ मिल जाए जल्दी। योर फेथफुली, उनकी साइन, आफ्टर साइनिंग दैट नेम, एनक्लोजर्स में 4 लिखा है, वाई 4, उसके साथ लेटर के साथ हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, तो 2 फोटोग्राफ और पान कार्ड और लाइसेंस कार्ड, लाइसेंस जो है उसका जेरोक्स और फिर चेक, यानी 4 चीज़ें हमने रखी, इसलिए एनक्लोजर में 4 ऐसा लिखा गया। यहाँ खत्म होता है अ लेटर टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट। लेटर रिगार्डिंग द स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक। अगर हमें पेमेंट स्टॉप करना है कोई चेक का, जैसे मैंने बोला हमने किसी को चेक दे दिया बट ड्यू टू सम अनसर्टेनिटी द चेक इज लॉस्ट और आइदर आवर वर्क इज नॉट डन, okay, or our check is lost, then what we have to do, we have to stop the check payment immediately. So here also that type of one example specimen is given. Let us see that in a very well manner. Again the same rule, on the right side the residential number is being given up, then the mobile number, and now the address. First of all your name, here the name of Dr. Mihir Lagwankar is given and his address now 24 Flamingo Park, New CG Road, Chandkheda, Ahmedabad 382424. So after the pin code 1 line is left, एक लाइन छोड़ दिया है, उसके नेक्स्ट लाइन में 20th जुलाई 2017 डेट मेंशन किया है। अगेन डेट के बाद एक लाइन, जैसे हम सिंगल लाइन में लिखते हैं, हमारा नोटबुक सिंगल लाइन का है, अगेन 1 लाइन वी हैव टू लीव, वापिस एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद बैंक के मैनेजर का एड्रेस, द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू सीजी रोड, चांदखेड़ा, अहमदाबाद 382424। अब हम कौन से बैंक के लिए लिख रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए लिख रहे हैं, और किसको, तो मैनेजर को। अगेन उनका एड्रेस न्यू सीजी रोड, चांदखेड़ा, अहमदाबाद। जैसे हमने मैनेजर का एड्रेस फुलफिल किया, उसके बाद देखो वापस एक गैप है, इसका मतलब वहाँ पे और एक लाइन लीव किया गया है। जैसे वो लाइन लीव हुआ है, नेक्स्ट लाइन हमें लिखना है डियर सर, courtesy, okay, with respect only we have to write any letter, so dear sir. After that again leave 1 line, then write subject. What is the subject? To stop payment check number 0236308। डायरेक्टली चेक नंबर यही मेंशन कर दिया। क्यों, काफ़ी बार ये होता है कि बैंक एम्प्लॉयज़ इतने बिजी होते हैं कि वो पूरा डिटेल में ना पढ़ पाए, इसलिए टू स्टॉप पेमेंट चेक नंबर, ये ऐसा करके सब्जेक्ट हम क्यों लगते हैं, ताकि हम जब भी फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, ऑफिशियल अथॉरिटीज़ को इतना टाइम हो और उसको डिटेल में पढ़ पाए, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसलिए सब्जेक्ट्स में अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो वो उससे पूरा डिटेल उनको पता चल जाएगा। चोरी हो गया होगा, खो गया होगा, कहीं रख दिया नहीं मिल रहा हो गया, कोई ले गया हो गया, या तो किसी को दिया था बट वो काम नहीं हुआ इसलिए हमें पेमेंट रुकवाना, एनी रीज़न कैन बी दैट, बट उनको अभी ये आइडिया आ गया है कि पेमेंट ये नंबर का स्टॉप कर देना, तो इजीली वो एक ही ग्लैंस में इसको समझ सके, इसलिए सब्जेक्ट लिखा जाता है। नाउ यू विल आस्क द क्वेश्चन, तो मैम नीचे इतना सारा डिटेल, देखो कभी कभी हमें कर्टेसी के साथ लिखना पड़ता है और क्या पता वो फ्री हो तो पढ़ भी ले,
ठीक है, इसलिए लिखा जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट लेटर मस्ट बी रिटन विद द सब्जेक्ट, ताकि टाइम हो तो वो पूरा पढ़ लेते हैं, ना हो तो वो सब्जेक्ट पढ़ के भी तुम्हें प्रॉम्प्ट रिप्लाई, प्रॉम्प्ट यानी तुरंत इमीडिएटली रिप्लाई कर पाए, इसलिए सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आफ्टर सब्जेक्ट अगेन वन लाइन इज लेफ्ट. Now I am going to read the letter. Listen it in a very careful manner. I have held a SB account number 10123245556 with your bank for the last 12 years and I operate it regularly. This letter is to return to confirm the telephonic talk held in the morning regarding the stop payment of a check. तो ये जो है डॉक्टर मिहिर, इनका जो है अकाउंट एसबी अकाउंट लास्ट 12 साल से इस बैंक के साथ लगा है और रेगुलरली उसको ऑपरेट भी करते हैं। उनका अकाउंट नंबर दिया गया है 10123245556। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि सुबह इन्होंने कॉल करके बताया था कि उनको एक चेक का पेमेंट स्टॉप करवाना है, तब वहाँ से ये बात आई होगी कि आपको लेटर देना पड़ेगा। इसीलिए उस टेलीफोनिक टॉक को, क्योंकि हम जब ओरली बात करते हैं उसका कोई एविडेंस नहीं होता है, जैसे लेटर्स आर ऑलवेज एविडेंस, इसलिए रिटर्न कंफर्मेशन दे रहे हैं कि मॉर्निंग में जो बहुत बात हुई थी उस बात को करना है, यानी उनको एक चेक का पेमेंट स्टॉप करना है। व्हाट इज दैट चेक नंबर एंड व्हाट हैपेंड, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल मैनर। द चेक नंबर 0236308 इज रिटन इन द नेम ऑफ Mr. Shrikant Joshi, dated 19th July 2017 and drawn on the State Bank of India of rupees 10,000. I seem to have lost or misplaced. I am worried at it is a bearer check. If the above mentioned check is presented to you to the bank by anyone, please do not make the payment of the said check. ठीक है, तो आप डेट वापस एक बार देखो, डेट क्या था 20 जुलाई यानी 19, कल ऑलरेडी ये चेक उन्होंने कल बना दिया है। तो चेक नंबर 0236308 मिस्टर शशिकांत जोशी के नाम पे लिखा गया है, जो 19 जुलाई 2017 को लिखा गया था और उसका अमाउंट 10,000 था जो SBI से ही पेमेंट के लिए दिया गया है। बट एक्चुअली डॉक्टर मिहिर से या तो वो लॉस्ट हो गया है या उन्होंने खो दिया या कहीं रख दिया और उनको नहीं मिल रहा है, और उस चेक में बियरर चेक है, बियरर चेक यानी जो जिसके पास वो चेक हो जाके दे उनको वो पैसा मिल सकता है। इसीलिए अब वो वरीड है कि अगर ऊपर मेंशन किया गया डिटेल जो है वो चेक किसी ने पास करवा लिया तो वो श्रीकांत को भी पैसे नहीं जाएगा और इनका पैसा भी चला जाएगा, इसलिए वो वरीड है उस चेक के बारे में, इसलिए उन्होंने ऊपर मेंशन जो चेक नंबर किया। अगर कोई उस चेक को लेके आपके पास पेमेंट के लिए आए तो प्लीज़ उस चेक का पेमेंट मत कीजिए। इस तरीके से जो है मिहिर रिक्वेस्ट उनके पास बैंक के पास करते हैं। आई हैव फुल फेथ दैट यू विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन इन दिस रिगार्ड। तो इस तरीके से वो ये बोल रहे हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप प्रॉम्प्ट यानी जल्द से जल्द एक्शन लोगे इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू, तो यहाँ पे तुम देखो तो राइट साइड में अगेन एक लाइन छोड़ के लिखा है थैंक यू, फिर योर फेथफुली मिहिर लांगेदर का साइन एंड मिहिर लांगेदर नाम। तो यू हैव रिटर्न द पोर्शन। तो इस तरीके से आपको कोई चेक का पेमेंट स्टॉप करवाना हो, ये तो मिसप्लेस्ड या लॉस्ट है बट आपका कोई काम दिया गया था बट वो काम नहीं हुआ, तो अभी आप उस पेंशन को देते हुए ये चीज़ रीजन पे बता सकते हो। तो इस तरीके से आप पेमेंट को स्टॉप करवा सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टुडेज टॉपिक. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Let us do a short summarization of the today's topic that we have seen. Today we have seen the letter 2 and the letter 4 to open a demat account. If you are having a saving account or a current account in your bank and if you want to open up a dematerialization account to deal up with the shares changes, security changes, then what things you have to do, that is being discussed up in the letter. So in that Manoj B. Dave has written a letter to his bank. He is saying that he is writing his full address,
date and phone number and registration number. After that, leaving one line, he is writing the manager's address and detail of the bank. After that, subject to open a demat account. Then he is writing dear sir, salutation. Then he is again writing the letter. In the letter he is writing that his full name, from how many years he is having the account in the bank, and what is his account detail, which type of account he is having. He is telling the reputation of the bank is very good, and even he came to know the recent consumer or customer service oriented campaign that was been done for the demat and online banking. So he is showing his desire to open a demat account, and after that he is assuring that he will keep the minimum balance for the demat account, and he is ready to do and obey the rules and regulation of the bank to open that account. And he is telling that he is sending enclosing the photos and the Xerox copies of the PAN card and license. After that he is sending a check of 500 by which the account can be opened up, and he is waiting for a prompt reply from the bank, and he is waiting for the customer ID and the password of the bank. In this manner he is writing a letter to the bank, and then he is doing the closure salutation, yours faithfully, then his signature is done, and then his name is being written. So here this type of letter can be written up to do the open or we can say that to open the demat account of your own, if you are having any account in the bank, and if you are willing to share deal with the share and securities, means SEBI securities, then you can do this demat account opening. So after that we have seen to stop the payment of a check. So this letter was written by Dr. Mihir. In the same manner, the left side was having the address of Dr. Mihir, on the right side phone number and residential number was that. After that one line was left. Then the date was been mentioned, again one line was left, then the manager's address and the manager's name and the address of the bank was been written. After that, subject, leaving one line, subject was been given up to stop the payment of check number. The check number was already being given up there, and then the salutation dear sir was been done up, and again the Dr. Mihir is telling his name and his account number, which type of account, from how many years he is holding up the account. Now he is coming to tell the reality that in the morning only he has a telephonic talk regarding the payment cancellation for particular check, but they asked the written letter, so he is confirming by the writing the letter. He is telling that yesterday 19 July he placed a written letter for Shrikant, but due to some problem he has misplaced it or lost it. So he is worried that that check is a bearer check, so anyone can encash it. That's why he is telling that if such number of check is given to the bank for 10,000 rupees, then don't do the payment, stop the payment for particular check. In this manner he is asking the request to the bank, and he is telling that he is waiting for a prompt reply from the bank, and he has the full faith on the bank. In this manner again he is writing the thank you, closing salutation, and your faithfully he is completing that closure part salutation. Then his name and signature is been written up. So there we are finished up the letter number 3. So in this manner we have seen the letter number 2 and 3, which are the request letter. I hope that you all have understood this portion in a very well manner. I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.